Dear students, from Mentor English, myself Professor Raza. Today we are going to discuss English literary term Allegory. It becomes a narrative poem. Allegories are written in the form of fables, parables, poems, stories, and almost any other style or genre. The main purpose of an allegory is to tell a story that has characters, a setting, as well as other types of symbols that have both literal and figurative meanings. One well-known example of an allegory is Dante's The Divine Comedy, Spenser's Fairy Queen. Now I am going to give you the Urdu translation of this literary term. ये एक तवील नज़म होती है और अफ़सानों की शक्ल में या तमसील की शक्ल में या नज़म की शक्ल में या शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में या किसी और शक्ल में लिखी जाती है। इसका असल मकसद कहानी सुनाना है। इसमें किरदार हिस्सा लेते हैं और इसकी बाकायदा तौर पर सेटिंग होती है और इसमें अलामात भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये अदबी और मजाजी दोनों हो सकती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल दांते की डिवाइन कॉमेडी और स्पेंसर की फेरी क्वीन है। तो डी सब्सक्राइबर, ये थी आज की लिटरेरी टर्म जो हमने जो है वो डिस्कस की, और अगली लिटरेरी टर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर में होंगे। वी विल बी कम बैक विद न्यू लिटरेरी टर्म। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।